No nation has mastered the art of the big batch quite like India. From cooking for 150,000 people for Onam to feeding 2 million children in the world's largest free school meal provider, we traveled across India to discover just exactly how these meals are cooked in such big batches. Today, our journey starts at the Golden Temple. This is the largest free kitchen in the world. Open 24 hours, year-round, this food hall feeds 100,000 people for free each day. And on religious holidays, that number can double. Just one of these huge bowls is enough to feed around 10,000 people. We visited Amritsar in India to find out everything that goes into feeding such a large crowd and to see just what it takes to make such big batches. This is Harmandir Sahib, often referred to as the Golden Temple. It's the largest Sikh shrine in the world. But despite being part of the holy site, this kitchen doesn't discriminate. The food is completely free to anyone, regardless of religion, gender or ethnicity. ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਜੀ ਵਿਖੇ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੀ। Community kitchens or langar have been popular across South Asia since the birth of Sikhism, and the langar at the Golden Temple has been serving meals since 1577. Each dish is cooked in giant metal vats. Over 100 gas cylinders and huge piles of wood are burned through every day to keep things running 24/7. And there's only one short 30-minute break in the cooking from 4:30 to 5 a.m. Thousands of vegetables have to be peeled and prepared by volunteers before they're taken to be cooked. And while the menu can vary, depending on availability or the donated vegetables that the kitchen may receive, it is always vegetarian. But keeping this many people fed takes a lot of ingredients. ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ। If you've never heard the term quintal before, it's 100 kilograms. So that's a total of 2,000 kilos or 2 tons of dal per day. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। 25 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼, 10 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, 4 ਕਿਲੋ ਮਿਰਚ, 4 ਕਿਲੋ ਮਸਾਲਾ, 4 ਕਿਲੋ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, 1.5 ਕਿਲੋ ਹਲਦੀ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਲੱਗਦਾ। That's over 375 kilos of onions and 100 kilos of spices every 24 hours just for the dal. To make it, chana dal or split chickpeas and urad dal or black lentils are mixed together and repeatedly washed. They're then moved into even larger vats and mixed with the onions, spices, salt and ghee, a clarified butter, and cooked together. The kitchen spends over $5,000 a day on ghee alone. And it's not just the dal. Each day, the kitchen offers the lentils, a vegetable dish, bread, kheer, rice, pickle, water, and tea. Kheer is a sweet pudding made of rice, milk, sugar, and almonds boiled together. But one of the biggest demands on the kitchen is bread. Unlike the huge vats that can be made in bulk, each chapati needs to be rolled out separately before cooking. Once rolled, each one is hand-coated in ghee to add flavor and keep it from drying out. To keep up with demand, the work is split between machines and people cooking by hand. Producing the bread alone takes 10 tons of flour a day. ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। 4 ਤੋਂ 5000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ 15 ਤੋਂ 17000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ 11 ਤੋਂ 12000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 6000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। And to keep this operation running smoothly, it takes a lot of volunteers. ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ 300 ਤੋਂ 350 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। This selfless service is an important part of Sikhism. Sevadars, or religious volunteers, are key to keeping this operation running daily. From peeling and chopping vegetables and even donating food to serving and cleaning, almost everything is volunteer run. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹੌਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਪਰੇਟ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। Using metal trays keeps waste to a minimum, but it makes a lot of noise. The scale of the kitchen has been constantly expanding to accommodate more and more visitors each year. 20 years ago, the kitchen will use 3,500 kilos of flour per day, but now that number has tripled. It now costs over $4 million a year to keep the kitchen running, but with a constant stream of donations and support, the langar has kept up with demand no matter the number of visitors. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਹਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। This crew of 20 chefs is working against the clock as they prepare 150,000 sariyas for Kerala's harvest festival, Onam. Every sadhya is made of 20 distinct vegetarian dishes and requires the team to prepare at least a month in advance. It is a huge task, and all the responsibility for delivering it successfully falls on Chef Mahadevan. എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലേക്കും ഒരേ മെന്റാലിറ്റിയിലും ഒരേ മൈൻഡിലും പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പോഴും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. We visited Vinayaka caterers in Kerala to see how Chef Mahadevan and his team prepare an Onam sadhya in such big batches. Among the 20 dishes they make, one of their most popular is a dessert called Palada Payasam. ആ മലയാളി അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയേ വേണ്ട, ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പായസം കഴിക്കാത്തതായിട്ട് ഒരാളും ഇല്ല. അത്രയ്ക്കും ഒരു വൈഡായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ഡിഷാണ്. Making this dish is time intensive and begins with making rice flakes out of a brown rice that is washed, dried and crushed. Coconut oil and sugar are then added into the rice and the mixture is placed inside a banana leaf where it is rolled, tied and steamed. സോ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ അതിലേക്ക് വന്നു, നാടനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. The resulting rice flakes are pressed in the morning and set aside. Also in the morning, 120 liters of milk are poured into a large pot and boiled. ഈ പാല് കയറ്റി ആ പാല് തിളച്ച് പാല് വറ്റി കുറുകി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ അട അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സമാസമം സെറ്റാക്കുന്നതാണ് ഈ പാലട എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പാലടയുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 തൊട്ട് 6 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ഒരു പാലടയുടെ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ആ പാലടയിൽ അത് തന്നെ ആ അത്രയും സമയം നമ്മൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നിന്ന്. Another popular dish in the Onam Sadhya is avial, which has traditionally been made with 13 different vegetables. At Vinayaka, avial is made in batches that can feed 500 to 600 people. അവിയലിന്റെ മോസ്റ്റ് ചാലഞ്ചിങ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരികയാണ്.
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടിയാലും കുഴപ്പമാണ്, കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമാണ്. Because there are so many vegetables, everything is washed and chopped the day before cooking. അവിയലിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേന, മുരിങ്ങാക്കോല്, പാവയ്ക്ക, അച്ചിങ്ങ, വെള്ളരിക്ക, പടത്തിക്ക. ഇപ്പം 1000 പേരുടെ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 7 ബക്കറ്റ് ചേന. In the morning, the vegetables are added inside of the giant pots and cooked on low heat. അപ്പോൾ തീ കൺട്രോൾ ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്. അത്രയും ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ണും കാതും അതിലേക്ക് ഇരിക്കണം, മനസ്സും മുഴുവനായിട്ട് അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴേ ആ അവിയലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. തിരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുഴുവൻ അതിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് ഇത് കൂട്ടി ഇളക്കുമ്പോൾ അതിലും ചെറിയ തീ ആയിരിക്കണം. At this stage, chefs also add coriander, turmeric, salt, raw mango, and sour curd. Then they cover the pot and leave it to steam. വേവിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൈര് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കട്ടിയായിട്ടുള്ള തൈരാണ്. ആ തൈര് ലൂസായി മോരായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻസേഷൻ തൈര് ലൂസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും. ഈ തൈര് നമ്മൾ മുഴുവനും വറ്റിച്ചെടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ കൊടുത്തിട്ട്. Once all of the buttermilk has been drained, the avial is ready for more spices. Cumin paste, green chili paste, and curry leaves are all added and mixed inside. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ചതച്ചത് കൊടുക്കും ഈ അവിയലിലേക്ക്. പച്ച തേങ്ങ കഷ്ണങ്ങളും തേങ്ങയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ ടെക്സ്ചർ. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളും ഇത്രയും പല വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേരുമ്പോൾ അവിയൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷ് തന്നെയാണ്. കണ്ടവാൻ എരിവുണ്ടാവില്ല, കണ്ടവാനും പുളിയും ഉണ്ടാവില്ല, കണ്ടവാനും ഉപ്പും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം സമാസമം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. But achieving this flavor is easier said than done. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അവിയലിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം സമാസമം ചേർന്ന് വരൂ. Another popular dish is sambar, which also requires a day of prepping before anything is cooked. Heaps of lentils are washed, soaked, and then boiled. Once the lentils have cooked, a mix of spices is added to the pots, including tamarind water, coriander, turmeric, asafoetida, green chilies, curry leaves, and jaggery. The sambar is brought to a boil and coconut oil is added along with chopped vegetables. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മുരിങ്ങക്കോലുണ്ടാവും, പാവയ്ക്ക ഉണ്ടാവും, വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടാവും, വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടാവും. But the most distinct flavor of the sambar lies in its masala, which is a mix of coriander, black gram, Bengal gram, long chilies, curry leaves, and asafoetida. അത് ഓട്ടുവറവ് വറക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വറുത്ത് ഇടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ മസാലയാക്കി നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് പെയർ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സാമ്പാർ ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു ദോശയുടെ കൂടെ സാമ്പാർ ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ സാമ്പാർ ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ്. ഏതൊരു ഐറ്റം എടുത്താലും അതിനോടൊപ്പം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് സാമ്പാർ. Chef Mahadevan's company has been making sarias for 32 years. It began cooking for groups of 50 to 100 people and eventually grew into a daily operation, serving thousands of meals every month. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ 15,000 പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 10,000 പേർക്ക് തേണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ മൈൻഡിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കിടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൾക്കാരുടെ നാക്കിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ടഫ് ടാസ്ക്. കാരണം അത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം അത് അത്രയും പെർഫെക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. കാരണം ഈ ഒരു
തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണതില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഇതൊരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള കലയാണ്. സംഗീതം പോലെ സമുദ്രമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. നമ്മൾ ദിവസവും ഇതിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾ ദിവസവും ഇതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എൻക്വയറീസ് ഒരുപാട് വരും. ബട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് മറ്റേ 100% സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Today, Chef Mahadevan employs a crew of 20 people at the height of Onam to meet the demands of his customers. തൊഴിലാളികളൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളൊരു കുടുംബമായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ വിനായകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഒരു മുതലാളി തൊഴിലാളി ബന്ധമില്ല. എല്ലാവരും തൊഴിലാളികളാണ്, എല്ലാവരും ഈക്വൽ, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷയവും. While feeding this many people is no easy feat, Chef Mahadevan remains humble about the art and craft of his work. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം ഞാൻ എത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ. എൻ്റെ ഒരു നിയോഗമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നിമിത്തമാണ്. ഞാൻ അതിനൊരു നിമിത്തമായി. When all of the dishes have been cooked, they are packed and brought to a dining hall where they are served as elaborately as they are cooked. Banana leaves are placed on tables and served as plates. At a traditional sadia, the banana leaf tips must always face to the left of the eater. Once set, workers scoop the dishes into exact positions from left to right, and papadams, which are like spicy crackers, are added as a final touch. പ്ലേറ്റുകളിൽ വിളമ്പുമ്പോൾ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും വേണ്ട രീതിയിൽ വിളമ്പാൻ സാധിക്കില്ല. വിളമ്പിയാൽ തന്നെ അതെല്ലാം ഒന്നാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണെങ്കിൽ ഇലകളിലാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് വിളമ്പുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൻ്റേതായ ഒരു രുചി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. കീ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോറ്, സാമ്പാർ, അവിയൽ, കാളൻ, തോരൻ. The smallest portions are also served on the left side, and larger portions are closer to the right side. ചോറ് വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് സാമ്പാർ നിർബന്ധമാണ്. സാമ്പാറും കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. പപ്പടവും ഈ പരിപ്പും നെയ്യും സാമ്പാറും കൂടി കുഴക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. സാമ്പാറിൽ വെച്ചാൽ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും വരും, എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും വരും സാമ്പാറിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലൊരു കറിയാണത്. അവിയലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഹെൽത്തിന് പറ്റി. അതിന് പുളിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. അവിയലിൽ എല്ലാ കഷ്ണം വേണം. അതിനകത്ത് മുരിങ്ങാക്കായാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് ചീമ്പി വേവിക്കുക, അത് ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ്. Onam is a 10-day harvest festival that marks the first month of the Malayalam calendar and commemorates the return of the mythical king Mahabali from the underworld to his home in Kerala. His return is celebrated with floral artwork, traditional dances, boat races, and the Onam Sadia. Vinayaka's Onam Sadia costs around $3 per person, and the amount of food you can eat is unlimited. Throughout the meal, servers come around to tables, refilling hot rice in the center of the banana leaf and spooning out more dishes. While many Hindu communities in Kerala opt for a purely vegetarian meal, other Hindu, Christian, and Muslim celebrants, especially those in the northern part of the state, enjoy their Onam feast with prawn curry or beef fry. The meal concludes in the same way it begins, with a variety of sweet payasam puddings and a fragrant digestive pan. ആ പായസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴം എടുക്കണം. ആ പഴം ഏത് പായസമായാലും വരുമല്ല, പായസത്തിൽ പഴം കുഴയ്ക്കണം. പാലട അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴല്ല അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതിന്. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ്. This is the Shantivan Complex, a mega kitchen in Mount Abu, Rajasthan, belonging to the spiritual organization Brahma Kumaris.
The kitchen is run entirely by volunteers who cook enough food to feed 40,000 people a day. The operation spans 4 floors and includes 14 dining halls, which can seat 15,000 people at a time. We visited the complex during a special celebration called Baba Milan to see how it prepares these meals in such big batches. Work in the kitchen begins at 5:30 a.m. with hundreds of volunteers cutting vegetables and peeling steamed potatoes by hand. During Baba Milan, 2,500 volunteers need to help prep and cook the festival meals. But that isn't something Banu Prakash, who's head of the bread department, is worried about. तो कितनी भी सेवा होती है तो हम देखते हैं कि समय पे सेवा के जो सहयोगी है वो भी मिल जाते हैं. The cut vegetables are loaded onto crates and wheeled into the main kitchen, where they're washed again in large metal containers and strained. All of the vegetables the kitchen uses are seasonal and bought directly from farms. And the food is prepared following the Sattvic diet, or the Yogi diet, which is rooted in Ayurvedic practices. Today the chefs are cooking rajma, vegetable sabzi, chapatis, and teplas. While most of the prep work is done by hand, some vegetables are processed using machines. Crates of tomatoes are pureed and spinach is chopped finely. On the other side of the kitchen, another team uses that tomato puree to make a sauce. They pour 5 liters of peanut oil into a giant pot. Then they mix in whole wheat flour, curry powder, handfuls of cumin seeds, asafoetida, bay leaves, and chili powder. Buckets of pureed tomatoes are poured inside and tossed together with garam masala, a common Indian spice mixture. The chefs then scoop the sauce out with buckets and place it into large metal containers so that it can be delivered to another section of the kitchen. The tomato sauce is rolled to chef Nilesh Bahi, who has been working here for 17 years and is in charge of making rajma, a curry dish made with kidney beans. है ना. वैसे मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन यहाँ आकर ही मैं इतना राजमा जो बनता है यहीं सीखा और मैं बनाता भी हूँ अभी. मेरा फेवरेट है. तो काश मैं राजमा बहुत दिल से बनाता हूँ. He soaks the kidney beans for 10 to 12 hours before boiling them in this pot for 3 hours. Once they're cooked, Nilesh uses a small scooper to examine the beans' tenderness and gauge the broth consistency. When the beans pass the test, he tips the pot and scoops in 400 kilograms of the tomato sauce. He then fills the pot with more water so it achieves the same consistency he had before the tomatoes. This is something Nilesh determines with his eye. On the side, he mixes oil, cumin, coriander, garam masala, asafoetida, gram flour, and chili powder into a bucket. He then pours this into the pot and adds salt. After he adds the first round of spices, he tastes the rajma and decides if it needs more flavor. Once Dinesh approves of the taste, he mixes in finely chopped spinach. और जो आप देखेंगे बर्तन, जो आप उसका कैपेसिटी 1200 लीटर का है. उस बर्तन में हम लोग जब पूरा भर के बर्तन बनाते हैं, उसमें 7,000 लोगों का दाल या राजमा बन जाता है पूरा. Cooking all of this food requires an immense amount of energy. Since 1990, the kitchen has used a concentrated solar array on top of its roof to heat water and generate steam, which can be used to cook most of the food the kitchen makes. The cooked rajma is drained through a spigot into smaller containers, which are then covered and wheeled to the dining halls. One of the most important dishes made in the kitchen is sabzi, a mixed vegetable dish that varies depending on the vegetables available that day. Cooks heat oil in a massive pot along with cumin seeds, curry leaves, and asafoetida. Next, they add turmeric, cut chilies, and chopped bottle gourd.
They mix everything together before adding in chopped potatoes, garlic gourd, and cauliflower. Then they add water and season the mix with salt and chili powder. Next come green beans, a pot full of tomato sauce, peas, cut green bell peppers, and shredded carrots. It's finished off with a generous amount of salt. Like every other dish this kitchen serves, the vegetables are taste tested and seasoned accordingly during the cooking process. Once the chef at hand gives the flavor a thumbs up, the mixture is cooked back into the metal pots and wheeled to the dining halls. Bread is essential to every meal. The bread department at the Shantivan complex can make up to 26,000 flatbreads every hour. To do so, bakers first pour 50 kilogram bags of flour into mechanical sifters to remove large clumps of flour. तो ऐसे 200 केजी आटा हमको 10 मिनट में ये मशीनें गूंद के देती है. The sifted flour is then taken to mechanical mixers where different types of dough are made. Today, the bread department is making two types of flatbreads, chapatis and teplas. The tepla dough is made by combining water, whole wheat flour, turmeric, chili powder, ground spinach, and fenugreek seed. Once mixed, the dough is wheeled to volunteers who use their hands to roll it into palm-sized balls. These balls are then brought to a team of 200 rollers who flatten them so they can be cooked. Chefs rub the flattened teplas with ghee and slap them onto flat griddles to cook. Together, this team can make 20,000 teplas an hour. On the other side of the bread department, machines are used to make chapatis without fillings. The dough is top-loaded into machines, which chop, flatten and bake it into crispy chapatis. ये एक मशीन एक घंटे में 2000 चपाती अपने को बना के देती है. ऐसी 7 मशीनें अपने पास है, तो 14000 चपाती एक घंटे में मशीन से बनाई जाती है. Like everything else that gets cooked here, the breads are placed inside metal containers to keep warm and wheeled to the dining halls for guests. In the dining halls, the rajma is served with rice, chapatis, and bhindi masala, a side dish made of okra and spices. During Baba Milan, the Hindu god Shiva, who is recognized as the father of souls, is believed to visit practitioners. तो बाबा मिलन का मतलब शिव बाबा हमारे यहाँ पे एक साकार मीडियम के अंदर साकार शरीर में आते थे. सब बाबा के बच्चे, बाबा का भंडारा है, वो भरपूर रहता है, कभी खाली नहीं रहता, सबके लिए फ्री. Many of the devotees have been coming here for years. 17 वर्षों से हम परमात्मा के साथ मिलन मना रहे हैं. हमें बहुत अच्छा यहाँ फील होता है. जिस सुख शांति के लिए लोग बाहर जाते हैं वो हमें यहाँ प्राप्त होता है. सिर्फ हम नहीं, यहाँ पर हजारों भाई बहन आकर लाभ लेते हैं. उसके पीछे के एक भाव है कि यहाँ हर एक व्यक्ति जो आ रहा है वो अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए आ रहा है, मन की शांति के लिए आ रहा है. Imbuing the food with positive intention is one of the biggest responsibilities during the cooking process. तो जैसे हम सोचते हैं तो हमारी सोच से हमारी वृत्ति बनती है, और जैसे हमारी वृत्ति होती है वैसे वाइब्रेशंस बनते हैं. भोजन में वो वाइब्रेशंस बढ़ते हैं तो खाने वालों के ऊपर भी उसका इफेक्ट बनता है. ये जो भाव और भावना है यही इस भोजन को स्पेशल बनाते हैं. नहीं, भोजन बनता है तो यहाँ देखा जाता है कि ये जो भोजन हम बनाते हैं तो हमारा ये लक्ष्य रहता है कि ये भोजन खा के सब खुश हो जाए और हमको दुआएं दे. There are 200 eggs in every batch of this famous Indian street food. Chef Mohammed Nasir can make up to 10 batches per day. That's 2,000 eggs. Egg Burji is India's take on spicy scrambled eggs. It's a specialty of the Indian state of Maharashtra.
We visited Pav Bhaji and Burji Center in Mumbai to find out how this dish is made and see just what it takes to make such big batches. It begins by finely dicing tomatoes, onions and cilantro. For a daily portion of egg burji, this stall uses and chops approximately 88 to 110 pounds of tomatoes, 66 to 88 pounds of onions, and 10 to 15 bunches of cilantro. Next, oil is added to a tawa or griddle, followed by a mountain of chopped onions, which are fried for a few minutes before green chilies and tomatoes are added. नमक मसाला तो है ही है, उसका कोई वजन नहीं होता, तो खुलता रहता, डलता रहता, खुलता रहता, डलता रहता. Next, a medley of spices is added. The vegetables are cooked and smashed using a masher until the tomatoes and onions melt and form a thick emulsion of all the flavors. Once the tomato-onion emulsion is nearly cooked through, each egg is slowly cracked by hand in the center and added onto the heat. The eggs are scrambled with a spatula, and the other layer of the tomato-onion emulsion is slowly incorporated. Next, the fully cooked egg burji is pushed to the perimeter. In the center of the tawa, butter is melted, followed by finely chopped green chilies and large spoonfuls of multiple spices. This process is called tarka, a common Indian cooking technique that allows for the tempering of whole or ground spices in oil, butter, or ghee. This process enhances the flavor and aroma and creates a richly spiced dish. The final dish is garnished with cilantro and portioned into plates for each customer to enjoy. It is served with a buttered toasted piece of pav and an onion tomato salad. If the spice is too much to handle, you can request a side of yogurt. Unlike scrambled eggs, egg burji isn't limited to breakfast. It can be eaten throughout the day. In fact, this stall attracts its largest crowds between 10 p.m. and 3 a.m. Here, the burji pav is really great. It's fresh. I've been eating here since childhood. It's just yum. A single batch with 200 eggs takes 3 hours to make, from chopping the vegetables, cracking all the eggs, and frying to serving the final dish. A single batch is sold within 1 hour, feeding 60 to 70 people. Mohammed Nasir is an expert at making the dish. His street stall is now famous in Mumbai. Pav Bhaji and Burji Center has been attracting crowds for over 10 years. About 500 people visit a day to watch vendors make this high-volume dish. देखो बुर्जी जो फेमस है तो महाराष्ट्र में ही फेमस है. इंडिया में तो कोई भी घर में भी बनाता है. बाकी मेरे पास दिल्ली से आते, बाकी उन्होंने बोला कि बॉम्बे के जैसा बुर्जी मोहम्मद नासिर के जैसा किसी का नहीं. This is Akshaya Patra, the world's largest free school meal program. This kitchen alone makes enough biryani for 75,000 children daily. Across India, the Foundation's 65 kitchens serve 2 million children every day in over 19,000 schools, and has served over 3 billion meals since its inception in 2000, something which Vice Chairman Sri Chanchala Patidasa is very proud of. It's like feeding all of India 3 times. We visited a mega kitchen to see how they make vegetable biryani and moong dal payasam in such big batches. This mega kitchen is located in Bangalore, the capital of India's southern Karnataka state, and staffs 230 workers across 3 floors. We start on the top floor, where all of the food is cleaned, cut, and prepped. Every day, workers prepare the following day's raw ingredients, and then store the food in a cold room that can hold up to 5 tons of food. On an average day, we use about 25 ingredients in this kitchen. And one very important aspect in Akshaya Patra is the menu design.
Today's menu includes vegetable biryani, an Indian rice dish that the kitchen prepares with a mix of vegetables and a house blend of spices. Workers begin by running the crates of prepped vegetables through these cutting machines. So because we are preparing large quantity of food and we have to do it very quickly and we have to do it very cost efficiently, we extensively use a lot of technology. This batch of biryani contains tomatoes, green peppers, cabbage, carrots, potatoes, and squash. If you look at these crates, every meal which goes to a child at least has minimum 50 gram of vegetable for a primary school child and 75 gram of vegetables for an upper primary school child. Alongside the vegetables, workers also portion and prepare rice for this dish. The rice is then washed thoroughly with water before it's cooked. On an average day, the kitchen can handle about 7 tons of grains and 5 tons of dairy. The washed rice and pre-cut vegetables then move through a chute that connects to the second floor. This simple use of gravity is one of the key components of this facility, as it reduces the amount of manual labor and keeps things clean. The ingredients land into 51 of these stainless steel cauldrons, where the cooks use massive stirrers to mix everything together. Workers then close the lids and utilize a 2-ton boiler that generates steam to cook the food. So biryani takes typically an hour to make, right from pre-processing to finishing it, and the cauldron which you see here can feed about 1,000 children. For food safety and cleanliness, the vegetable biryani is temperature checked and logged. And next to each cauldron, a small stainless steel vessel stores a sample of each batch, which is then tested 24 hours later for microbial growth. Once a week, children receive their lunchtime meal with a sweet treat. And here, moong dal payasam is being made. Moong dal payasam is a dessert, and children love dessert, being youngsters. So each of these cauldrons can handle about 1,200 liters of dal or lentils. 1,500 pounds of lentils drop down into each of the 6 cauldrons used to cook the dish. Milk and raisins are also added for texture and creaminess. Finally, jaggery syrup, which is an unrefined natural sweetener made from sugarcane, gets stirred into the cauldrons. Typically, moong dal payasam takes about 1.5 hours to 1 hour 45 minutes, right from boiling the moong dal till the final dessert is made. Once the vegetable biryani and moong dal payasam are finished cooking, workers transfer the dishes from the cauldrons into these carts, which are then taken to another large chute that connects to the ground floor. The food drops down, then gets portioned and packed into individual vessels for distribution. These are food grade vessels. Each of the vessels can handle food for about 85 to 100 children. And one of the important cornerstones of Akshaya Patra is hygiene and safety. So you can see each vessel where food is going to be stored is getting washed or cleansed with steam. Then they're passed down a conveyor belt and get loaded onto Akshaya Patra's custom-built buses called Buses of Hope. These are insulated vehicles which keep the food warm. Large quantity of food goes in each vehicle.
over a period of time, Akshay Patra has developed logistics ability. So for example, from this kitchen, we have about 32 vehicles. We handle about close to 650 schools, and we are feeding about 75,000 children every day, though the enrolled strength is about 110,000 children. And that is just a single kitchen. When you include the 64 other locations across India, they feed over 2 million children daily. It had a very modest beginning. We started serving 1,500 children in the outskirts of Bangalore city in the year 2000, and gradually we saw there were more and more requests from the headmasters of the schools who would write to us and say, "We see your vehicle carrying food pass in front of our school. Can you please stop and feed our children?" And when we saw these requests, we kept increasing and scaling up our program. And that's how today in Bangalore city, we serve about 200,000 children. So how does Akshaya Patra get its funds to pay for all of the free food they provide? So we get a certain amount of support from the government. We top it up with some more money that we raise from individuals and foundation to ensure that the meal we give to the children is hot, nutritious, safe, tasty, so that children are delighted to have a meal at noontime. Today, they serve 19,000 schools across 14 states and 2 union territories in India. Kitchen staff will create menus based on the students' preferences and feedback by area. For example, Akshaya Patra's kitchens in northern Indian regions can expect foods like roti or flatbreads. In southern India, rice is more widely eaten as a staple food, and the children love the rice-based dishes prepared by the foundation. నాకు బిసిబెళబాత్ అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే చాలా బాగుంటుంది. బిసిబెళబాత్ నాకు అమ్మమ్మ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. Another important aspect of Akshaya Patra is we want to give what otherwise their mothers will give to them if they are at home and the mothers had resources. Of course, no one can replace a mother, but Akshaya Patra tries to come as close to what a mother can cook. ನನಗೆ ಪಲಾವ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬೀನ್ಸು, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. You know, you cannot run a big program of this kind in a mechanical, official manner. All of the personnel involved in the Akshaya Patra program come with a deep commitment of compassion and kindness for children. And so it is that compassion that keeps us very highly motivated day after day to see that we do our tasks and duties with a lot of heart. During the month of Ramadan, this kitchen runs 24 hours a day, mashing goat, chilies, spices, and ghee into a thick and creamy stew known as Haleem. For 25 years, Mohammed Abdul Majid and his sons have been running Pista House, a popular chain known for making this dish on massive scales. आज जो हलीम बन रही है तो उसका हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 60 से 60 to 70,000 आदमी खाएंगे. Haleem is popularly consumed by Muslims in Hyderabad during Ramadan, who often break their daily fast with this high-protein and calorically rich dish. But that doesn't mean it's exclusive. और ये डिश कोई ऐसी डिश नहीं है कि भाई ये ओनली मुस्लिम की डिश है या ओनली दूसरे सबकी डिश है. हमारे इंडिया की डिश है ये. We visited Pista House's central kitchen to see how he makes Haleem in such big batches. The day begins with unloading and weighing all of the vegetables. देखिए हलीम बनाने में जो टाइम लगता है अगर आप देखा गया तो ये टोटल 24 आवर्स लगते हैं इसको. Mountains of onions, green chilies, and garlic are peeled by hand. The onions are then grated through machines, while the garlic is mashed into a paste. On the other side of the kitchen, hundreds of goats are wheeled into a large room and chopped into smaller pieces. हलीम बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज जो काम है वो है मीट का सिलेक्शन.
और जो है गोट मीट ही इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। गोट मीट के अंदर ये होता है कि जो गोट है वो अच्छी होना चाहिए, उसको डॉक्टर से चेक करना चाहिए। तो ये तो होगा ही है, उसके गोट का मीट देखते हैं, उसके बाद फिर मीट आता है। Every pot is filled with 100 liters of water, followed by 100 kilograms of goat and 9.5 kilograms of green chilies. Once filled, the pots are covered and left to boil for 5 to 6 hours. Then the lids are removed and a mixture of cilantro, basmati rice and the ginger garlic paste that was prepared earlier is poured inside. Once that has cooked through, a huge pot of soaked wheat flour is added. तो 60% शरबती होता है, 40% बंसी होता है, तो दोनों मिला के करते हैं। Keeping a consistent temperature and constantly stirring the mixture are two of the biggest challenges when making Haleem. रवे को, गर्म पानी को और नीचे जो आग जलते रहती है, क्योंकि रात थोड़ा भी अगर उसके अंदर रहेगा तो जो है उसके अंदर उसको दाग जो बोलते हैं, जो चिपक जाता है, तो उसमें वो आती है उसके अंदर। Once the flour is mixed, it's time for the spices. जो हमारे स्पाइसेस है, स्पाइसेस में इलायची, दालचीनी, कबाब चीनी, लौंग, शाहजीरा और ज़ीरा, रोज़ पेटल्स, काली मिर्ची और कबाब चीनी, ये धनिया पाउडर, ये सब इसमें हर हिसाब से 100 केजी के हिसाब से मिक्स करते हैं उसको। ये पूरे ऐसे मसाले लगते हैं। इसके अलावा भी जो है हमारा एक सीक्रेट जो फार्मूला है वो भी लगता है, वो सीक्रेट है वो, तो उसके अंदर जो है वो भी लगता है। After the masala is added, they seal the pots for steaming, which allows the flavors to be completely absorbed. तो उसकी जो स्टीम आती है, स्टीम से वो पूरा दम होता है, वो कम से कम 2 घंटे इसको रखते हैं। Next is the most physically demanding part of the cooking process, smashing the Haleem. Workers pour large bags of ghee into the pots and use wooden sledgehammers to smash the Haleem for 30 minutes, in a process called hota. Each of these hammers weighs 17 pounds, making this strenuous work. इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है और तकलीफ़ ये है इसके अंदर कि टोटल ये मैनुअल है, तो मैनुअल में पूरा काम करना पड़ता है और मैनुअल हम रखना ही चाह रहे हैं मैनुअल का, क्योंकि इससे जो है लोगों को जॉब्स मिलते हैं। अगर हम जो है ऑटोमेशन में गए तो जॉब्स कम हो आते हैं। When the mixture reaches a smoother consistency, they add lentil paste and continue mashing for another 15 to 20 minutes. Finally, it's topped with boiled ghee, then scooped into thermal containers and wheeled to another room where it's weighed and loaded onto delivery trucks. At every pista house location, Haleem is served in to-go containers and always with toppings. फाइनल जो है हलीम पे टॉपिंग करते हैं ब्राउन ऑनियन, धनिया पाउडर, कोतमीर, प्योर घी, लेमन, तीरा बनता। Arab merchants are believed to have introduced Haleem to India under the name haris sometime during the 17th century.
जो हलीम आई थी इंडिया में, वो निज़ाम की पीरियड में आई थी। जब यहाँ के रूलर जो निज़ाम थे उनके पीरियड में हलीम आई थी, जैसे गल्फ़ कंट्री से आई थी और ईरान से आई थी। हैदराबाद आने के बाद वहाँ पर जो है स्पाइसेस नहीं है, जैसे सऊदी अरेबिया में या जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ में स्पाइसेस नहीं है, तो बहुत ही फीकी हलीम, बहुत ही एक ऐसी थोड़ी स्वीट हलीमी बनती थी। मगर हमको प्राउड है कि हम वहाँ से जो हलीम आई थी यहाँ से बना के फिर वापस हम वहाँ पर भेज रहे हैं। हम लोग पिस्ता हाउस का ये बड़ा कारनामा है कि यहाँ से बना के वहाँ भेज रहे हैं। While Haleem is exclusively cooked during Ramadan, many locals who are not Muslim enjoy it just as much. And many of the people who buy this Haleem have been doing so for years. मैं पिस्ता हाउस के हलीम 24 ईयर से खा रहा हूँ। बहुत शानदार बनाते हैं ये हलीम पिस्ता, लाजवाब है। वो बोलने में नहीं आ सकता है क्या है, बोल दो वो एक अजीब ही है, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताने में नहीं आता। ये इसमें जो काम है ये दिनों का ना महीनों का काम है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जैसा रमज़ान ख़त्म हो गया, 1 महीने के बाद तैयारी शुरू कर देते हैं हम लोग। This dag or cauldron, located at the Ajmer Sharif Dargah in Rajasthan, India, is one of the largest in the world. Donated by Mughal Emperor Akbar in 1567, the dag measures 37 feet wide and was made in such a way that the rim never gets hot, even while the fire is ignited and the food is being cooked. Here, volunteers are making 4,800 kilograms of a sweet rice dish called zarda to feed the 20 to 25,000 devotees who visit the shrine each day. Keeping a watchful eye over the cooking process is Syed Mujahid Hamer Chisti, who is also in charge of tending to the devotees. हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी ब्राह्मण की एक ऐसी एकता का प्रतीक है, कोई भूखा नहीं जाए। We visited the shrine to see how they make the sweet prasad in such big batches. Before any food is made, volunteers must empty the cauldron of donations left by pilgrims, which could include money, rice, lentils, or other groceries that the temple can use to make the prasad. Then it's time to start cooking. Making this dish is time-intensive and begins by lighting a wood fire underneath the dag. There are 4 openings around the dag, and 50 kilograms of wood is kept at each one to keep the fire going strong. The devotees who have sponsored that day's meal then gather around the cauldron to help with the dish's preparation. First, they fill the cauldron with 4,000 liters of water. They also add jugs of saffron water and rose water, which help add a depth of flavor to the finished dish. उसके बाद उसके अंदर में हल्दी डाली जाती है, आटा डाला जाता है और उसके बाद मैदा डाला जाता है। मैदा और आटे का ये है कि इसका कोई परत नहीं है, इसका कोई ढक्कन नहीं है, तो वो उससे वो ढक्कन बनता है। Once the mixture starts to boil, volunteers carry bags of sugar up to the cauldron platform and pour them inside. Then it's time to stir the mixture, which is easier said than done. Since the dag measures 37 feet wide and 15 feet deep, it takes at least 4 volunteers to maneuver a large wooden oar. 2 people push and pull on the wooden handle, while across the cauldron, 2 people use ropes that are attached to the bottom. They move in tandem with each other to establish a rhythm. Volunteers then add in over 1,100 kilograms of rice and multiple cans of ghee.
They continue to stir the mixture until it thickens and reaches a smooth consistency. इसको बनाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। हिलाने से मतलब वो जो चीज़ जहाँ कच्ची रहती है तो वो हिलाने से वो चीज़ पक जाती है। Dry fruits and nuts like cashews, almonds, and pistachios are added as a final touch before the dish is ready to be served. एंड में जब बनती है ये तो लकड़ी की सीढ़ी डाली जाती है और सीढ़ी में आदमी उतर के उसको निकाल के वो बांटता है। That volunteer will wear special shoe covers that are cleaned before each meal. They scoop the rice with buckets and pass them along a line to fill large steel barrels. Once these are full, volunteers scoop the sweet prasad into small bowls and hand them out to hungry pilgrims. टेस्ट थोड़ा मीठा था, थोड़ा नमकीन था, थोड़ा ये था, स्वीट था, बहुत अच्छा था। थोड़ा टेस्टी अलग है, घर का जैसा बनता है उससे अलग टेस्टी है। The deg and the tomb both have an incredible history. बाबा का दरबार तो 900 साल पुराना है। बाबा के दरबार में ये देग बादशाह अकबर ने दी, जो कि 500 साल से जो है ये मीठा प्रसाद बनता है, जब से आज तक कायम है, जो कि उस दौर में जिस तरीके से बनता था वो आज भी बन रहा है। But the cauldron is only filled to capacity on special occasions or when the number of devotees at the dargah is very high. On most days, the temple uses a second, smaller cauldron known as the Choti Deg, which was donated by Akbar's son Jahangir in 1613. Yet, regardless of which cauldron is used, thousands of pilgrims visit the sacred site every day to eat the prasad and seek the blessings of the saint. ये डिश का खास बात यही है कि जो जिस श्रद्धा से, जिस रूप से खाता है, उसकी मनोकामना वो पूरी होती है। जी ये बनावट जो है बहुत सॉफ्ट है, इसकी टेस्टी मीठापन आता है, एक तबरुक है ये और टेस्टी बहुत अच्छा है। अजमेर शरीफ तो वैसे ही बहुत फेमस है, यहाँ सबकी ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे एक बार ज़्यादा ज़रूर करें और मेरी दिली तमन्ना है कि जो ख्वाहिशें मैं लेके आया हूँ यहाँ पे इंशाल्लाह वो पूरी हो जाए। 500 साल से ये मीठा प्रसाद बनता है। ये बड़ी देग की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर में ये भाईचारा का एक प्रतीक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ब्राह्मण तमाम लोग इस चीज़ को बहुत ही पसंद करते हैं। स्वीट राइस है ये, मैं तो खाता ही रहता हूँ, इसी पे पल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं शुरू से ही बचपन से ही ये चीज़ें खाता आया हूँ और लोगों को बहुत ही टेस्ट लगता है। जो एक दफ़े खाता है दोबारा मांगता है। This is the Gurudwara Bangla Sahib temple in New Delhi, India. Open 24 hours a day, 365 days a year, the temple's kitchen, or langar, feeds 35,000 to 40,000 people every day, for free. And on religious holidays, that number can swell to well over 100,000 people. At the heart of this entire operation is kitchen manager Habesh Singh, who makes sure there is always enough to eat. कभी भी कोई आए, कोई रात के 2 बजे आए, ऐसा दिन कोई नहीं रहा कि कोई बंगला साहब से भूखा गया हो। To keep up with demand, the kitchen uses specialized machines that can do everything from chopping vegetables and stirring stews to steaming the perfect dal. We visited the temple during a special holiday called Gurpurab to see how it makes a festive meal in such big batches. The day begins with making a type of sweet rice pudding called kheer, which is a special menu addition for Gurpurab. At the helm of the operation, is head chef Balbir Singh, who's been overseeing this process for years. 700 किलो की खीर बननी है जो पूरे दिन चलेगी।
Large bags of white rice are poured into metal bowls and washed by hand. 25 kilograms of the washed rice is then scooped into a massive pot of water and mixed by a mechanical arm. एक कढ़ाई में हमारी 250 किलो दूध की खीर बन रही है इस टाइम, जो कि कम से कम जो क्वांटिटी है उसकी 300-400 किलो हो जाती है. Once the pot has been filled with milk and it starts to boil, they pour in a large bag of wheat flour. जो कंप्लीट 1 घंटे में तैयार हो जाती है हमारी चीज़. अदरवाइज वैसे अगर हम तैयार करते हैं तो 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हमारी चली हैं हमें बहुत सुविधा हो गई है. ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम टाइम में हो जाता है. During the pandemic, the kitchen found itself needing to make more food with less stuff. The solution was to introduce pots that could automatically stir and cook most dishes in half the time. तो ऐसा सिस्टम सेटअप किया है, अब 1 घंटे में हम 1 लाख आदमियों को लंगर भी प्रोवाइड करा सकते हैं. तो कोरोना काल में जैसे लंगर की ज़रूरत पड़ी, एक दिन में हमने 3.5 लाख लोगों को लंगर उनके घर तक पहुंचाया था. While the kitchen has embraced technology for cooking, many of the vegetables the kitchen uses are still processed by hand. One of the most popular dishes the community kitchen makes is aloo matar, a curry dish made with potatoes, peas, and a creamy tomato sauce. Making this dish begins with heating vegetable oil in a pot as a base for the tadka. जैसे घरों में ग्रेवी बनाते हैं उसी हिसाब से प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन प्लस उसके बाद मसाले, जीरा, काली मिर्च, देगी मिर्च, किचन किंग, कसूरी मेथी, वो सब डाल के कंप्लीट सब्जी तड़का तैयार किया जाता है. This is followed by baskets of potatoes, peas, and large ladles of tomato puree. एक कढ़ाई में हम 200 किलो आलू और 60 किलो मटर डालते हैं, जो कि क्वांटिटी इसकी भी 300-400 किलो तक कंप्लीट बनती है बनने में. When the dish is ready, chefs tip the pot and scrape everything out. Another curry dish the kitchen serves for the holiday feast is kadi chawal, which is made with a base of cumin, masala, and dried fenugreek leaves. When the base is mixed, chefs add gram flour and hung curd. इसके अंदर हमारा 15 से 20 किलो बेसन लगता है और 30 से 40 किलो मतलब कि दही लगता है. While the kadi mixes, chefs prepare the final part of the dish on the side. They mix spinach, onions, gram flour, and spices in a large pot to make pakodas or fritters. When they achieve the right consistency, the mix is then tossed into a wok and fried quickly. These fritters are then added into the curry. ये मतलब ये भी 300-400 किलो इसमें कंप्लीट कड़ी बनती है. Next up, the kitchen is making aloo gobi, a simple vegetarian dish made with potatoes and cauliflower. It starts with a tadka base of cumin, turmeric, and chili powder. Then the chefs add in baskets of cauliflower and potatoes. They mix everything together to evenly coat the veggies and continue stirring until they are finished cooking. An everyday staple on the langar's menu is fresh dal, or split lentils. Green, yellow, and brown lentils are all washed by hand daily and added into a pot full of water. The lentils are then seasoned with salt, chili powder, and turmeric, and covered. 5 कुकर है हमारे पास, एक के अंदर 60 से 70 किलो कच्ची दाल बनती है. ये सारा ऑटोमेटिक है. जब दाल कंप्लीट हो जाती है ये बजर बजने चालू हो जाता है कि दाल कंप्लीट हो गई है. इसमें भी बहुत टाइमिंग कम लगती है, जैसे दाल को 2 से 3 घंटे लगते हैं, इसमें आधे से पौना घंटा लगता है. इतनी जल्दी बनती है और इतनी टाइमिंग कम लगती है ना कि जितनी संगत आ जाए, लाखों के हिसाब से संगत आती है, कभी लंगर की कभी कमी नहीं हुई.
जिसको कंप्लीट बनने के बाद दाल 350-400 किलो होती है। Across the kitchen, flatbreads are made using machines. उसके बाद ये हमारी मशीन रोटी मेकर जो 1 घंटे में 2000 प्रसादे बनाती है और कंप्लीट ऑटोमेटिक है। सब कुछ इसमें पेड़े, आटा, सब ओनली आटा गूंदना पड़ता है हमारे को। गूंद के इसके अंदर डालेंगे, कटिंग, पेड़ा सब इसी ने करना है। उसके बाद ये देखो, ये रोटी कंप्लीट हो गए, अप डाउन 3 राउंड में बाहर है। While these machines make a majority of the bread the langar uses, there is another area of the kitchen dedicated to making these breads by hand. This is done so people can practice sewa, or self-love service, a tenet of Sikhism. जो संगत आती है, जिनकी श्रद्धा होती है कि हमने भी गुरुद्वारा बंगला साहब में सेवा करनी है, तो वो यहाँ पे आके मैनुअल सेवा कर सकता है। 24 घंटे चलती है, जब भी किसी की श्रद्धा हो कर सकते हैं। The langar officially opens its doors at 5 a.m. to serve food. तो आप देखोगे गुरुपुरब का दिन है आज, गुरुपुरब चल रहा है और ये पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाता है। इसी तरह आज गुरुद्वारा बंगला साहब में भी मनाया जा रहा है, तो लाखों में लोग आएंगे। Because of the kitchen's popularity, it's not uncommon for people to wait 2.5 hours outside to get a free meal. Inside the dining hall, visitors take their seats side by side in long rows known as pangats. This style of seating is an important part of the temple's philosophy of promoting equality and ending discrimination. तो जहाँ पे राजा भी आए उसको भी उतना ही समानता दी जाती है और एक भिखारी को भी उतनी समानता दी जाती है। Once everyone is seated, volunteers known as sivadars lead a religious chant in honor of the guru. Then the servers come around spooning large portions of food into metal plates. And while the amount of food one can eat is unlimited, there is a rule that not a single bite of food can be wasted, so plates must be cleaned before finishing the meal. लंगर की खासियत तो यही है कि वो लंगर है, प्रसाद है, उसको आप एज ए मील नहीं ले सकते, ये एज ए गुरु का प्रसाद होता है और इसमें हर पार्ट ये बेस्ट है, कोई भी इसमें कोई कमी ना होती है ना होनी चाहिए और ये बेस्ट है, अपने में हर चीज़ अच्छी है। When a batch of guests has finished eating, workers sweep and wash the floors before another group is allowed to enter. और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है ताकि साफ़ सुथरा रहे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि सबको साफ़ सुथरा, हाइजीनिक और गर्म लंगर तैयार करके दिया जाए। मैं बंगला साहब काफ़ी बचपन से आ रहा हूँ, लगभग 20-24 साल हो गए जितनी मेरी एज है। खाना साफ़ सुथरा था और काफ़ी आज क्या था कि नॉर्मली क्या होता है कि दाल चावल रोटी मिलती है नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली डेज़ पे, बट आज क्या जैसे बैसाखी होती है, आज 31 भी है, तो आज गुरु की कृपा से हमें पनीर भी मिला, खीर भी मिली। और ये देखो कि ऐसा नहीं है कि स्पेशली कुक है कि एक ही बंदा आके बना रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म का बंदा आके कोई भी सेवा कर सकता है, उसकी मन में सेवा भावना होनी चाहिए। और सेवा से क्या होता है कि दिल में एक भावना जागती है उस अकाल पुरख के लिए, फिर हम उसके आगे फिर हमारा अंदर से बनता है। Every day, a team of chefs spend nearly 12 hours stirring milk and sugar to make over 700 kilograms of halwa for the famous sweet shop Chanji Halwa Wala. The sweet and soft milk-based dessert may be time-consuming to make, but people travel from all over to get it from Ji Halwa Wala. 450 किलोमीटर गाड़ी चला के मैं यहाँ पाली हलवा लेने के लिए आया हूँ बीकानेर से। While you can find countless types of halwa all across India and throughout the world, this shop has continuously been praised for its dedication to the craft and quality of ingredients. We visited the shop to see why it is so famous and how it prepares gulab halwa in such big batches.
Chanji Halwa prepares 3 batches of halwa every day at its production workshop in Pali, Rajasthan, India. This process begins at 5 a.m. by fueling the furnace with the coal that piles high up on the walls. क्वांटिटी तो यही है, महीने में एक गाड़ी लगभग चलता है कोयला, ये लगभग आता है 17-18 टन आता है. The coal comes from mines in Jharkhand, and Chansing Rajpurohit, owner of Chanjiwala, believes it gives the dish a distinctive flavor. वैसे तो गैस पे भी बनाओ, किसी पे भी बना दो, कोयले की जगह जो टेस्ट आता है वो एक अलग ही आता है. Workers use mallets to break each brick of coal into smaller pieces. ये कोयला ही तोड़ते हैं दिन भर, कोयला तोड़ के वापस डब्बे भर के भट्टी के पास में लेके जाते हैं यहाँ से. गाड़ी भी आई है दूध की अभी, ये 22 कैन आई है, 880 लीटर दूध आया अभी. The dominant ingredient in halwa is milk, which the shop sources from nearby villages. To get the creamy taste and texture, only full-fat milk is used. The milk is then strayed into kadays, which are deep pots similar to woks, but with steeper sides. मेरी यहाँ पर 12 कढ़ाई इधर है, 10 कढ़ाई सामने गोदाम में है. दिन भर चलती रहती है, सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक चलता रहेगा. The whole cooking process takes about 4 hours, and a full staff. 4 workers are dedicated solely to the coals, while 10 to 12 chefs work on the furnaces. They use ladles to continuously stir the milk for 2 to 3 hours until it becomes thick and creamy. While the stirring movement may seem simple enough, it actually takes a seasoned chef to get it right. देखो खुरपा तो इसमें क्या है कि एक जैसा चलाना पड़ता है, जो बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए, दोनों एक हाथ में जो खुरपा एक सरीका चलाना पड़ता है. खुरपे बरोबर नहीं चला हुआ तो नीचे जल जाता है, और जल जाने के बाद में वो काम नहीं आता है. इसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, 15-20 दिन की ट्रेनिंग करते, फिर उसको खुरपा चलाने के लिए भट्टी पे खड़े करते. Once the milk reaches the right consistency, sugar is added. हमारी जो शक्कर आती है वो महाराष्ट्र से आती है. महाराष्ट्र की शक्कर बढ़िया आती है एकदम, थोड़ी मीठी भी कम रहती है और अच्छी क्वालिटी की होती है. And the stirring doesn't stop there. The chefs will continue to stir the milk and sugar mixture for another 1 to 2 hours. और फिर उसको 100 टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर किया जाता है, नीचे वो डाला जाता है लोखंड का वो. Eventually, the contents of 10 kadays are combined into 4 to continue cooking slowly. When the thickened milk turns red and grainy and clarified butter starts to appear on the surface, the halwa is finished cooking. सिकाई का पूरी हो जाती है, फिर उसको नीचे बड़ी कढ़ाई में डालते हैं. Workers scoop 8 kilograms of halwa into these individual round serving plates and pick out any burnt bits with tongs. वापिस उस साइड से बना के इस साइड में लाके इसको ठंडा करते हैं थोड़ा. As the final touch, each dish of halwa is carefully decorated with work. बरक एक चांदी का पेपर होता है, ये मिठाई पे सजाया जाता है. इससे क्या इसकी सुंदरता बढ़ती है. और फिर सिल्वर फॉल लगा के फिर वो जाता है अपने दुकान पे, और दुकान पे जाके वो सेल कर देते हैं. When Chin Singh started the shop in 2007, he sold about 20 to 30 kilograms of halwa a day. But now, यहाँ से लगभग 700-800 किलो के लगभग जाता है दिल्ली दुकान. यहाँ से दिल्ली का 700 किलो लगभग है, तो महीने में 21-22 हज़ार किलो बनता है. the shop, which is very well known for its small, old table setup out front,
sees about 500 to 600 customers every day. और फिर ग्राहक की भीड़ आनी चालू हो जाती है, फिर वो ये दिन भर ऐसा ही क्रम चलता रहता है। Once they're at the table, customers can choose how much they want to purchase. दुकान खोलने के बाद में पहले तो वो एक टेबल है, टेबल के ऊपर कांच का काउंटर लगाते हैं। काउंटर लगा के बाद में उसमें एक थाल रखते हैं। पैकिंग तो अंदर होती है, बाहर वो जो 100 ग्राम 50-200 ग्राम पाव के जो आते हैं उसको वहाँ बाहर से ही दिया जाता है और अंदर की जो पैकिंग होती है। मैंने आधा किलो हलवा लिया है, ये बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं 2-3 दिन में इनके यहाँ आता रहता हूँ और ये मैं ले जाता हूँ बच्चों के लिए। तो और कहीं का बच्चों को स्वादिष्ट लगता ही नहीं है, इनके यहाँ का ही स्वादिष्ट लगता है ये हलवा। अच्छा जी, मैं छोटा था जब से आ रहा हूँ, मेरे पापा के साथ आता था पहले जी। हलवे का टेस्ट बहुत बढ़िया है, आप भी ट्राई करके देखें। बहुत अच्छा हलवा है यहाँ का पाली का। और ये यहाँ से दूर दूर से भी लोग आते हैं लेने के लिए, बाहर से जो आते हैं टूरिज़्म वो भी लेके जाते हैं यहाँ से हलवा। बहुत मशहूर हलवा है। पाली में इस हलवे की लगभग 35-40 साल हो गए। पहले तो ट्रेनें थी नहीं, तो फिर बहुत कम ही बनता था। जब से फिर ये थोड़ी बहुत ट्रेनें चालू हुई तो फिर धीरे धीरे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अब धीरे धीरे ऑल इंडिया और वर्ल्ड में ये हलवा प्रसिद्ध है। Halwa is believed to have originated in Arabia around the 13th century, but has since become an ubiquitous dessert throughout India. The recipe varies from region to region, but some of the common alternative ingredients include semolina, carrots, almonds and dates. But it seems like Chanji's version of the dessert has won the hearts of all sweet lovers. महीने में मतलब नॉर्मली ऐसे खाने के लिए तो 2-3 बार आ जाता हूँ। ये हलवा सिंपल सा नहीं, कभी प्योर दूध और शुगर से बनता है। कोई भी इसमें मतलब कलर्स वगैरह या कुछ ऐड नहीं करते इसमें, इसीलिए। हम ऐसे तो समझ लो 20-25 किलोमीटर से यहाँ से आए हैं, लेकिन कभी कभी हम 100-150 किलोमीटर बालोतरा से भी यहाँ लेने के लिए आते हैं। पाली का बेस्ट हलवा है चैंजी हलवा। पाली में बात ये है कि जो पाली का जो प्रसिद्ध हलवा है चैंजी हलवा, ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ। इतना बनाते बिक जाता है, ताज़ा ताज़ा बेचो, ताज़ा ताज़ा खाओ और इसमें मज़ा एक अलग ही है।